Hello and welcome back in today's class. Till question number 8, exercise 11.4 we have discussed in the previous video. Today we are supposed to start with question number 9. Let me show you question number 9 from the book. Question number 9 is the adjoining figure represent a rectangular lawn. This is the rectangular lawn with a circular flower bed. और उसमें ये वाला जो है ना बीच वाला portion, this is a circular flower bed in the middle. Fine. What we have to find the area of the whole land. Whole land means we have to find area of this rectangle, area of the flower bed, that means area of this circle, area of the lawn excluding the area of the flower bed. पूरे lawn में से अगर आप circle का area माइनस कर देते हैं तो कितना area बचेगा in third part, and in fourth part the circumference of the flower bed, and we have to find out what is the length of the boundary of this circular flower bed. Okay, let's go for that. This is the question. Okay, 2 centimeter is the radius, 10 centimeter is the length of rectangle, 5 centimeter is the breadth of rectangle. Okay, this information is given to us. In first part they have asked what is the area of the whole land. Whole land is our rectangle. Here we will find area of whole land. Area of whole land. And our area is rectangular in shape, that means length multiplied by breadth. Length is 10, breadth is 5. So whole area of whole land will be 50 meter. It is in meter. 50 meter square. This is first part we have calculated. Second part they have said what is the area of the circular flower bed. Area of circular flower bed. Area of circle is pi r square. Pi I will take 22 upon 7. What is the radius of the circle? That is 2 multiplied by 2. It will be 88 divided by 7. And 88 divided by 7 when you will divide you will get 12.56 meter square. This is the area of this circular flower bed. Now in third part they are asking what is the area left excluding the circular park. Area of land excluding the circular park. Excluding means here we will subtract 50 में से हम किसको माइनस करेंगे 12.56. होल में से हम किसका एरिया माइनस करेंगे सर्कल का एरिया. दैट मीन्स 50 माइनस 12.56. ओके, that will be 37.44 meter square. ये वो वाला एरिया बच गया, this area. Okay, excluding circular park. Now the fourth part is asking what is the circumference of this circular park. Circumference of circular park. What is the formula of circumference? That is 2 pi r. That is 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by 2. Again it will be 88 by 7. And when you will divide you will get 12.56 because same figure we have used here 88 by 7. When you will divide 88 by 7 you will get 12.56 and this is in meter. This will be in meter because this is circumference. Circumference is always in meter, centimeter like that. Okay. I hope this question is become clear to you. Let's go for the question number 10. Question number 10 says in the following figure find the area of the shaded portion. This is shaded. The gray color is the shaded portion. ये वाला एरिया मेरे को निकालना है. एक बार रफ आइडिया लेते हैं. फर्स्ट I will find out the area of this rectangle. अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल में से ये वाला ट्रायंगल हटा देती हूँ और यहाँ से ये वाला ट्रायंगल हटा देती हूँ, देन आई विल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. तो मेरे को करना क्या पड़ेगा स्टूडेंट? आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. लेंथ ब्रेथ बोथ आर देयर विद मी. आई हैव टू रिमूव द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल and area of this triangle. This is what I have to do in this question. Fine, let us begin. This is the figure of this question. Okay, first I will find area of rectangle ABCD. Area of rectangle ABCD, that is length multiplied by breadth. Length is 18, breadth is 10.
18 multiply by 10, area will be 180 centimeter square. Okay, area will become 80 multiply by 10, 18 multiply by 10, 180 centimeter square. अब हम एरिया निकालेंगे AFE का, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपके पास, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो दैट मीन्स ये वाली जो ट्रायंगल आपके पास बनी है, दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। What is my base here? That is 10. What is my height? That is 6. Multiply, you will get 30 centimeter square. Area of this triangle. Now I will find area of this triangle. Area of triangle EBC. EBC. Again half into base into height. Now see, what is the base here? 8. What is the height? That is 10. Half into base into height, because this angle is also of 90 degree in a rectangle. All angles are of 90 degree. If you cut both, you will get 40 centimeter square. तो हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करके रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस करेंगे. Here I will write area of shaded portion. Area of शेडेड पोर्शन. अब क्या करेंगे यहाँ पे, 180 माइनस फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया माइनस सेकेंड ट्रायंगल का एरिया. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 180 माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड इट विल बी 70. ठीक है, इंटीजर वी आर यूजिंग. 180 माइनस 70, आई विल गेट 110 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो आपके पास वो शेडेड रीजन था, this shaded region, what is the area of this shaded region? The area is 110 centimeter square. We have a second part of the same question. We have a square PQRS. This if it is a square, all sides will be same. If this is 20 centimeter, base will be 20, this will be 20, and all sides will be 20. Okay, because this is a square. Now, and we have taken it as a square. Sorry, it is not given anywhere in the question that it is a square, but हमें लेना क्या पड़ेगा, this is 20. और अगर हम इसको भी देखते हैं 10 plus 10, तो ये भी 20 बन रहा है, लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी अ स्क्वायर. हियर ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. इस ये वाली ट्रायंगल जो आपके पास बन रही है, हमें इसका एरिया निकालना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू, PQRS, we will find the area of the complete square. Then I will remove the area of this triangle, area of this triangle and area of this triangle. ये तीन ट्रायंगल जो कॉर्नर्स पे बन रही हैं, इनका एरिया निकाल के हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. Then I will find the area of this shaded portion. Let us see how we can. This is the question. First I will find area of square PQRS. Area of square PQRS, that is side into side into side, and side is 20, so it will be 400 centimeter square. Area of complete square. Now I will find area of this triangle TSQ. Area of triangle TSQ, that is half into base into height. You can see base is also 10 and height is also 10. If you solve, you will get 50 centimeter square. Okay, इसका एरिया हमने निकाल लिया. Now I will find out area of triangle PQT. Area of triangle PQT, that is half multiply by, what is the base, 20, what is the height, 10. You can cut, you will get 100 centimeter square. Now I will find area of this triangle QRU. Area of triangle QRU, half into base is 10, height is 20. You can cut 10 multiply by 10, 100 centimeter square.
नाउ आई विल राइट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। बड़े वाले में से जो होल है आपके पास उसमें से स्मॉलर ट्रायंगल्स का एरिया आप माइनस करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, व्हाट इज द टोटल एरिया यू हैव? एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 400 में से पहले आप क्या माइनस करेंगे? 50 जो आंसर आएगा उसमें से क्या माइनस करेंगे? 100 जो आंसर आएगा उसमें से क्या माइनस करेंगे? 100। तो ये आपका 400 बन जाएगा एंड माइनस माइनस माइनस, साइन विल बी ऑफ माइनस एंड ऑल विल बी एडेड। 250, 400 minus 250, 150 centimeter square because this is area. Okay, this is how we can solve, we can find out the area of this shaded portion. Okay, last question of this exercise as well as of this chapter. We are given a figure A, B, C and A, C, D. Okay, one figure is above the line, another figure is below the line. हमें निकालना है होल का एरिया, A, B, C, D पूरे का एरिया निकालना है. Student, how I will do? Area of A, B, C, D. I have to find out. First I will find out area of A, B, C. पहले मैं इसका एरिया निकालूंगी. देखो जो आपके ट्रायंगल आपके पास बनी है A, B, C और उसका आपको बेस भी पता है और उसके ऊपर जो हाइट गिरी हुई है, हाइट इज ऑल्सो इज नोन टू यू. तो पहले मैं ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया निकालूंगी. Then I will find out the area of this below drawn triangle and I will add the both. Area of ABCD कैसे आ सकता है? Area of triangle ABC plus area of triangle ACD. मतलब ABC above triangle, ACD below triangle. What is the area? Half into base. What is the base? 22. What is the height? 3. Plus हाफ इंटू व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल? इसका बेस भी आपके पास 22 और इसकी हाइट भी आपके पास 3 है. आप अगर चाहते तो एक का निकाल के आप 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते थे. दैट इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर यू. 11 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 33. हेयर ऑल्सो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 33. When you will add, you will get 66 centimeter square is the area of this whole quadrilateral ABCD. Fine. Student, I hope you have understood this question, and with that we are finished with our chapter as well as our exercise. And I hope that you already have understood the remaining questions. If not, please watch the video again for more clarification. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल और यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. We will meet in the next video with the next chapter of your maths book. Till then, goodbye and take care of yourself.